characteristics of hormones. तो सबसे पहली बात जो हार्मोन्स के बारे में है, दैट इज दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेक्रेटेड बाय endocrine glands. Second thing is they are poured into the blood for transportation. Third is these are the chemical messengers, right? Chemical messengers which convey messages from one site in the body to another site, right? साइट ए जिसको जहाँ पे सेक्रेशन होती है, तो साइट बी जहाँ पे विच इज़ द रिसेप्टिव साइट, राइट? और रिसेप्टिव साइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टारगेट organs. Receptive sites are also called as target organs. And another characteristic of hormones is that they control and coordinate various activities, control and coordinate various activities in the body. For example, the metabolism, the physiology, reproduction, the fight or flight response. So various different types of neurological, physiological and mechanisms or activities are controlled, and they also control growth. For example, we have got a hormone called growth hormone which determines the height, the breadth and the overall size of the body, right? So hormones are the secretions of endocrine glands. Now let's see how many endocrine glands we have. I'm going to enlist here endocrine glands in the body, right? So what we'll do is we'll make a human body on this side. So let us say, for example, this is a human body. This is a human body, right? And in here we have got the most marvelous organ यहाँ पे ऐसे, which is called the brain, and this is the spinal cord, right? तो brain के यहाँ पे एक चीज़ होती है in the middle of the brain, maybe perhaps in the diencephalon. In the diencephalon we have got this organ called as pineal gland. Pineal gland, one. सेकेंड, ब्रेन के डाइनसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन में ठीक पिट्यूटरी यहाँ पे देयर इज ए हैंगिंग मस्कुलर फ्लैप at the base of the brain या bottom of the brain which is called as pituitary. Pituitary के ऊपर, या it's also pronounced as pituitary, something like that. So pituitary के ऊपर जो है there is this gland called as hypothalamus. Hypothalamus gets its name from thalamus. Thalamus आप लोगों को पता है फूल जिस पे रेस्ट करता है, आपके पेटल्स या सेपल्स जिस पे रेस्ट करते हैं या स्टेमिन जिस पे रेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेमस. तो ठीक थैलेमस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन पे, उसके ऊपर एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड, ब्रेन के ऊपर थैलेमस के ऊपर दैट्स कॉल्ड एपिथैलेमस. उसके नीचे एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड, एक स्ट्रक्चर होता है दैट्स कॉल्ड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे वी हैव द which was once known as the master gland of the body, it's called pituitary gland. आप यहाँ पे आ जाएंगे in the cervical region, तो यहाँ पे एक triangular gland होता है आपके ट्रैकिया के आगे, तो this is called as thyroid gland. Thyroid gland के ठीक पीछे, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के आगे होता है, विंड पाइप जो आपकी है उसके ठीक पीछे ऐसे 4 बटन जैसे ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. तो आप उसके बाद थोरैसिक रीजन में आ जाइए, तो थोरैसिक रीजन, दिस इज़ द थोरैसिक रीजन. आई होप यू ऑलरेडी रिमेंबर द नेम्स विच वे. तो थोरैसिक रीजन में हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक important structure, primary lymphoid organ, is called thymus.
thymus is another endocrine gland. thymus से नीचे आप लोग आ जाते हो तो we have यहाँ पे लिवर है, लिवर यहाँ से स्टोमक जा रहा है, स्टोमक के ठीक नीचे there is a leaf like structure. This is called as pancreas, a flat structure. It's made leaf like but it's not usually like that, so it's called pancreas. पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज के बारे में मैंने अभी बताया था कि पेनक्रियाज से कुछ सेक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. दे आर ट्रैवल थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम. तो पेनक्रियाज इस हिसाब से हो जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. बट पेनक्रियाज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन एंड वन अनदर हार्मोन. तो इस वजह और वो सारी सेक्रेशंस ब्लड में चली जाते हैं, इसलिए पेनक्रियाज जो है इट इज़ ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड. तो ऐसे तरीके के ग्लैंड्स को मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड्स भी कहा जा सकता है, राइट. दे कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड्स. पेनक्रियाज के ठीक नीचे इफ़ वी हैव ए फीमेल, नो, पेनक्रियाज के ठीक नीचे यहाँ पे cannot be drawn that accurately. These, let us say for example, these are the kidneys. Kidneys के ऊपर एक triangular gland होता है on the top of kidneys. Kidneys को renal tubules भी कहा जाता है, और ऊपर के जो structures हैं उनको ad यानी ओवर renal, adrenal glands. तो we have a pair of adrenal glands. ये सारे एक एक थे, यहाँ पे ये 4 थे parathyroid glands. If we have a female, तो female में ovaries होती हैं. ovaries also secrete certain hormones. अगर हमारे पास मेल है तो मेल में यहाँ पे लोअर एब्डोमिनल रीजन में आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी देयर इज अ स्ट्रक्चर हैंगिंग कॉल्ड स्क्रॉटम. स्क्रॉटम में टेस्टिकल्स होते हैं. तो टेस्टीज या टेस्टिकल्स जो हैं, these are another glands, endocrine glands, which are present in case of males, right? So we have the list of all endocrine glands, right? Pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, ovaries, and testes. So this is the network of endocrine glands in the body. ये जो पूरा network है, this controls and coordinates various different activities and controls and coordinates the growth of the individual. This is called the endocrine system. Endocrine system. This is the endocrine system of humans. आपके कोर्स में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना है नहीं, बट वील हैव टू डिस्कस वेरियस the name and function of various different hormones secreted by all these endocrine glands, which we shall start one by one in another part of the video. Stay tuned. I'm going to upload that video today itself, and we are finishing off the endocrine system. See you in the next video.